Good morning everyone. This is Roma. Welcome to ODI classes. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମର एसएसबी टीजीटी रो ठीक अछि यूनिट 2 जोड़ा कि ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग ता विषय रे पढ़िबा को जाउछ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Am I audible to all? Please tell me. Okay. So एटा तमरो रहिबो पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन जो अछि तार यूनिट 2 कहले एसएसबी टीजीटी रो यूनिट 2 टा एबे पढ़िबा को जिवु पढ़िबो एबे. सो तार मु कांसेप्ट नै छी अल्प किछि कांसेप्ट आउ एमसीक्यू 50 टा एमसीक्यू तम पई आनी छी जोटा कि बहुत हेल्पफुल हबो पिला माने. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यूनिट 2 ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग. सो ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग विषय जानिबा पूर्वरु आमे कोन जानिबा पिला माने व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग ना मैनेजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट. हाउ टू मैनेज एंड स्ट्रक्चर द लर्निंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग. ओके, सो आमे लर्निंग कहले शिक्षण दबा पूर्वरु आमे केमिति सेही परिवेश को ताकू कौन करवा प्रिपेयर करवा. ठीक अच्छे. सो स्ट्रक्चर आउ केमती मैनेज करवा. हाउ टू डिलीवर इन क्लासरूम, व्हाट इज द कंटेंट, ओके, हाउ इज द एनवायरनमेंट. सो ये सब विषय की कौन हम पिला माने ना नमर ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग आसीजिवो. ओके, सो आमर प्रथम रे रहिला पिला माने टीचर सेंट्रिक लर्निंग. व्हाट टीचर सेंट्रिक लर्निंग. से टीचर सेंट्रिक लर्निंग रे पिला माने फोकस ऑन द टीचर एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज. एथिरे हमरो टीचर रो मुख्य भूमिका रहिबो. कहार ना शिक्षकंकर मुख्य भूमिका रहिबो फर्स्ट. देन टीचर्स टॉक्स, स्टूडेंट्स लिसन. हम टीचर कहिबे आउ स्टूडेंट माने सुनिबे. ठीक अछि. एंड एम्फासिस ऑन कंटेंट डिलीवरी एंड इंस्ट्रक्शन. कंटेंट मीन्स व्हाट द सिलेबस. ओके, सिलेबस रे जा जा थिबो सेटा डिलीवर करिवे टीचर आउ इंस्ट्रक्शन देबे. मते आज गोटे पढेबार अछि ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग. सो दिस इज द टाइप ऑफ टीचर सेंट्रिक लर्निंग. ओके, टीचर सेंट्रिक लर्निंग. देन लर्नर सेंट्रिक. आमे लर्नर सेंट्रिक पिला माने काहा को कहिबा. ओके, लर्नर सेंट्रिक काहा को कहिबा जे फोकस ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस एंड नीड्स. स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, टीचर फैसिलिटेट्स. एम्फासिस ऑन स्किल्स एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. लर्नर सेंट्रिक रे हमर स्टूडेंट उपरे बेसी गुरुत्व दिया जिवो. ठीक अछि. कहा उपरे पिला माने स्टूडेंट उपरे. सो आमर स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट. एठी पिला माने किए आमर एक्टिव पार्टिसिपेंट ना स्टूडेंट. आमर किए ना स्टूडेंट आमर एक्टिव पार्टिसिपेंट रहिबे. ठीक अछि. So emphasis on skills application and understanding. So learner centric amro learner centric learning रे कोन हम ना ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रो एटा गुटे पार्ट. सो एथिरे हमरो टीचर एज ए फैसिलिटेटर. दैट मीन्स ही मस्ट सी मस्ट बी गाइड. ओके, एंड हेल्प इन आवर स्टडी. दैट्स ऑल. ओके, सो एम्फासिस ऑन स्किल्स एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एटा होची लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे तमरो रहिला. देन सो लर्निंग सेंट्रिक आ गोटे रहिला. हमर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग हे गला. कोन ना टीचर सेंट्रिक,
लर्नर सेंट्रिक एंड लर्निंग सेंट्रिक आमर लर्निंग सेंट्रिक रे कौन हम पिला माने फोकस ऑन द लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ नॉट जस्ट द टीचर और स्टूडेंट एथिरे काहाकू ना आमर लर्निंग प्रोसेस ऊपर फोकस हबो काहा ऊपर ना लर्निंग प्रोसेस ऊपर एंड एम्फासिस ऑन इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी एटा आमर लर्निंग स्ट्रेटजी ऊपर गुरुत्व दब एंड आउटकम्स एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आमर पिलार कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कोथि हम ना लर्निंग सेंट्रिक रे सी केवल शिक्षण इंद्रिक पाठ ही पढ़िबो ठीक अछि सो often used interchangeably with learner centric but broader in scope एटा learner centric रे स्कोप रो इंटरचेंज हुए बट एटा कौन ब्रोडर इन स्कोप तार परिसर बहुत ही अधिक कहार ना लर्निंग सेंट्रिक रो कहार ना लर्निंग सेंट्रिक रो सो आमे क्वेश्चन देखिबा पिला माने सो टीचर सेंट्रिक अप्रोच प्राइमरीली फोकस ऑन आमर टीचर सेंट्रिक अप्रोच प्राइमरीली फोकस ऑन स्टूडेंट एक्टिविटीज टीचर डिलीवरिंग कंटेंट ग्रुप प्रोजेक्ट सेल्फ लर्निंग को पिला माने व्हाट इज द आंसर टीचर सेंट्रिक अप्रोच प्राइमरीली फोकस ऑन टीचर सेंट्रिक अप्रोच टा कहा ऊपर फोकस हबो ना स्टूडेंट एक्टिविटीज टीचर डिलीवरिंग कंटेंट ग्रुप प्रोजेक्ट एंड सेल्फ लर्निंग as usual teacher centric means teacher is the sole creator okay so answer is b so answer is b teacher delivering content amara teacher कौन करंती ना कंटेंट डिलीवर करंती वेरी गुड मधुसूदन एंड लकी लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन emphasizes amara learner centric education कौन emphasize करूची ना rote learning active student involvement strict exams textbook memorization amara learner centric education da emphasis करूची कहा ऊपर ना rote learning or active student involvement or strict exam or textbook memorization. So the correct answer is learner centric education emphasizes on active student involvement. Student करो 100% activeness रहिबा दरकार ठीक अछि so the correct answer is B very good. Inclusive education means catering to dash only advanced learner all learners needs teachers preferences exam scores okay. So what is the answer B very good only amara all learners needs because inclusive education means what ना समावेशी शिक्षा बा अंतर्निवेशी शिक्षा नुहे कि पिला माने amara inclusive education ओडिया होची अंतर्निवेश शिक्षा बा समावेशी शिक्षा तार अर्थ कौन ना गोटे छात तले ऑल भेराइटीज ऑफ स्टूडेंट बसिकी पाठ पढ़े सो एथिरे आमर ऑल लर्नर्स नीड्स अरे इनक्लूसिव एजुकेशन मीन्स कैटरिंग टू ऑल लर्नर्स नीड प्रत्येक शिशु मानकर अथवा आमर जो माने पढ़िबा को इच्छुक तांकर नीड्स को नहीं कि इनक्लूसिव एजुकेशन गठन करा हुए सो आंसर इज बी स्मॉल ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स डैश small group learning promotes dash isolation collaboration and peer learning teacher dominance passive listening so small group learning promotes dash जिते बेले हमर स्मॉल ग्रुप लर्निंग करा हबो माने गोटे छोटो ग्रुप को नै कि लर्निंग जिते बेले शिक्षण हुए सेते बेले सी कहा को प्रमोट करे पिला माने आइसोलेशन नुहे टीचर डोमिनेंस नुहे पैसिव लिसनिंग नुहे तो आंसर इज कोलैबोरेशन एंड पीयर लर्निंग आंसर इज कौन कोलैबोरेशन एंड पीयर लर्निंग ओके बी व्हिच इज ए फीचर ऑफ टीचर सेंट्रिक क्लासरूम आ भितरु कोटा हमर गोटे टीचर सेंट्रिक क्लासरूम रे गोटे कौन तार गोटे फीचर फ्लेक्सिबल सिटिंग ओके and direct instruction project based task
सेल्फ असेसमेंट कौन कौन पिला माने टीचर सेंट्रिक क्लासरूम रो कौन गोटे फीचर ना फ्लेक्सिबल सिटिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क सेल्फ असेसमेंट सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट ए नो फ्लेक्सिबल सिटिंग नुहे आमर टीचर सेंट्रिक क्लासरूम रे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन किए दियंती ना टीचर दियंती सो द करेक्ट आंसर इज बी द करेक्ट आंसर इज बी सेल्फ असेसमेंट रे एटा लर्निंग सेंटर्ड हे जिवो प्रोजेक्ट बेस्ड रे भी लर्निंग सेंटर्ड फ्लेक्सिबल सिटिंग टा आमर कहार एटा हबनी एटा भी लर्निंग सेंट्रिक हे जिवो सो द करेक्ट आंसर इज बी learner centric methods use lectures only activities and inquiry strict discipline no assessment okay what is the correct answer learner centric method use जदि आमे गोटे learner centric method use करूछु ताहाले सेटा कोथरे जीवो lectures only टा teacher centered रे जीवो TC एट लिख दवा strict discipline भी TC रे जीवो नो असेसमेंट एटा तो टोटली किछि हबनी सो आंसर इज एक्टिविटीज एंड इंक्वायरी जते बेले गुटे लर्नर सेंट्रिक मेथड यूज हबो द करेक्ट आंसर इज एक्टिविटीज एंड इंक्वायरी इंक्लूसिव टीचिंग रिक्वायर्स यूनिफॉर्म लेसन फॉर ऑल डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इग्नोरिंग डाइवर्सिटी सिंगल टीचिंग मेथड इंक्लूसिव टीचिंग रिक्वायर्स इंक्लूसिव टीचिंग कौन रिक्वायर करे कौन दरकार करे यूनिफॉर्म लेसन्स फॉर ऑल सर्वजनीन लेसन समस्तंग पाई नो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन ने बोथ डिसेबल चाइल्ड एंड फिजिकल आमर फिजिकल जो मानकर orthopedic okay physical challenges students plus normal student sitting in a same classroom so they need differentiated instruction से माने कौन नीड करंती ना differentiated instruction नीड करंती पिला माने so answer is B self learning involves self learning कौन involve करे teacher led session independent study group discussion only exam amara self learning involves teacher led session no independent study yes amara teacher self learning ta independent study re involve करे कौन ना independent study very good so answer is B group learning helps develop individualism social and communication skill competition only isolation group learning helps develop कौन social and communication skill because group learning रे कौन हुए ना बहुत पिला माने गोटे जगह रे सेम जगह रे बसी थांती सो तांको भितरे social और communication skill develop हुए ठीक अछि सो social and communication skill develop हुए teacher centric classrooms often use discussion lectures and demonstrations projects and peer teaching teacher centric classroom कौन पाई यूज हुए often use बेले बेले यूज हुए केबे ना discussion lectures and demonstration yes teacher centric classroom often uses lecture and demonstration the correct answer is B the correct answer is B very good learner centric classrooms encourage आमर लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम कौन पाई एनकरेज करे ना पैसिव रिसेप्शन एक्टिव इंक्वायरी मेमोराइजेशन टीचर कंट्रोल लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम एनकरेज करे कौन ना एक्टिव इंक्वायरी द करेक्ट आंसर इज बी एक्टिव इंक्वायरी आमर लर्नर माने कहले पिला माने जो माने पढ़ंती सो लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम एनकरेज एक्टिव इंक्वायरी दरकार ठीक अछि एक्टिव पार्टिसिपेशन दरकार इनक्लूसिव पेडागोजी एड्रेसेस इनक्लूसिव पेडागोजी कौन एड्रेस करे पिला माने देखो सो ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट डाइवर्स लर्निंग नीड्स सिंगल करिकुलम टीचर इंटरेस्ट inclusive pedagogy addresses pedagogy means
pedagogy is the art and science of teaching, is the art and science of teaching, science of teaching. ओके एटा कौन एड्रेस करे ना डाइवर्स लर्निंग नीड्स. ओके दैट मीन्स व्हाट ना all individual are not equal. Okay, everyone is unique according to her and his characteristics. So diverse learning needs, okay, addresses in inclusive pedagogy. आमर पिला जो भाया हम ताकू नीड्स टा भी से भाया दबा उचित. ठीक अच्छे. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Which method is not learner centric? Project method, lecture method, inquiry based learning, cooperative learning. आमर को मेथड टा लर्नर सेंट्रिक नुहे. आमर को मेथड टा पिला माने आमर लेक्चर मेथड टा को मेथड ना लेक्चर मेथड टा आमर टीचर सेंट्रिक. एटा होची टीचर सेंट्रिक. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? बी. बाकी सब गुड़ा लर्नर सेंट्रिक. प्रोजेक्ट मेथड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग इज ऑल आर लर्नर सेंट्रिक. ओके. स्मॉल ग्रुप्स आर इफेक्टिव. Small groups are effective for large scale lectures, collaborative problem solving, individual exams, teacher presentation. Small groups are effective for छोटो छोटो ग्रुप कौन पाई इफेक्टिव ना कोलाबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. कोलाबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हुए कौन स्मॉल ग्रुप रे. ठीक अच्छे. द करेक्ट आंसर इज बी. नॉट लार्ज स्केल लेक्चर्स एटा भूल. इंडिविजुअल एग्जाम एटा भी भूल. टीचर प्रेजेंटेशन एटा भी भूल. सो करेक्ट आंसर इज बी. टीचर एज ए फैसिलिटेटर इज सीन इन. टीचर जने फैसिलिटेटर यहा को सेंट्रिक मेथड रे देखा जाए. जल्दी कह. यस आमर लर्नर सेंट्रिक मेथड और लर्नर सेंट्रिक मॉडल. मॉडल नॉट, this is a kind of method. Okay, so the correct answer is B. The correct answer is B. Learner centric approach re teacher as a facilitator. Okay. Inclusive education improves. Inclusive education कौन improve करे पिला माने? Only scores, learning environment for all, teacher status, curriculum length. So the correct answer is learning environment for all. Learning environment for all. Inclusive education improves learning environment for all. Okay. समस्तंग पाई परिवेश समान शिक्षण परिवेश जोगाई दबा. एटा कहार लक्ष्य ना inclusive education ना. What is which is benefit of self learning? सेल्फ लर्निंग रो गोटे बेनिफिट कौन ना डिपेंडेंसी ऑन टीचर, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड रिड्यूस्ड एंगेजमेंट, लिमिटेड रिसोर्सेस. कह पिला माने व्हिच इज ए बेनिफिट ऑफ सेल्फ लर्निंग? सेल्फ लर्निंग रो कौन बेनिफिट ना इंडिपेंडेंट थिंकिंग. मोर स्वाधीन भाव में मु चिंता करी जे द करेक्ट आंसर कौन हबो कि न हबो. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Independent thinking is the benefit of self learning. Okay, is the benefit of self learning. Teacher centric education focuses on. Teacher centric education कोउथरे फोकस करे? Student interest, content delivery, student projects, peer assessment. So teacher centric education content delivery उपरे फोकस करे. कहा उपरे? कंटेंट डिलीवरी उपरे फोकस करे. बिकॉज टीचर नीड टू डिलीवरी द कंटेंट. ओके, टू फिनिश द सिलेबस. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी. लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम्स यूज. लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम कौन यूज करे? रिजिड स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी, सिंगल मेथड, नो फीडबैक.
लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम कौन यूज करे पिला माने ना फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजीज कौन ना फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजीज कहीं ना लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम यूज करे फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी जिते बेले पिलार इच्छा हैला सी पढ़िला सो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट okay he must learn okay so the correct answer is B flexible strategy. Inclusive practices involve excluding some students, adapting to all needs, uniform teaching, focusing on exams कौन हम inclusive practices involve हमर inclusive practice कौन involve करे ना को adapting to all needs very good adapting to all needs because adaptation must be required in inclusive practices inclusive education okay adapting to all needs समस्तंकर दरकार समस्तंकर जा जा नीड अछि ताकू नै कि कोन हबो जे so adapting to all needs is the correct answer. Group learning enhances dash. Group learning enhances individual competition so and teamwork skills, isolation, teacher authority. Group learning enhances group learning कौन enhance करूची ना individual competition, teamwork skill. The correct answer is teamwork skills. कौन पिला माने ना teamwork skill group learning को enhance करूची okay so the correct answer is B. Self learning requires dash constant teacher guidance, autonomous effort, group work only, lectures. Self learning requires constant teacher guidance, autonomous effort, group work only, lectures. आमर सेल्फ लर्निंग रिक्वायर्स ऑटोनोमस एफर्ट आमर स्वयं शासित एफर्ट दरकार कौन ना ग्रुप लर्निंग आमर सेल्फ लर्निंग रे तो आमर स्वयं शासित इच्छा दरकार जे कौन में इच्छा दरकार जे सेल्फ लर्निंग रिक्वायर्स करूची आमर जदि आमे निजे पढ़िबा ताहाले आमर ऑटोनोमस एफर्ट दरकार ठीक अछि आमर निजर इच्छा थिबा दरकार. Teacher centric methods are flexible, structured and directive, student driven, inquiry based. So SSB TGT notification केबे आसीबो मैम टिके कहंतु. SSB TGT रो तमरो SSB रो जो LTR आस्तेला हमरो जो LTR टा सेटा पब्लिश हो जाईची तांकर रिजल्ट ऑलरेडी बाहरी सरची तो SSB TGT टा हमरो जून सुधा आसी जीवो सो एबिटू तमे प्रिपेयर करले ही तमे अचीव करि परिबो गोटे दिन रे जते बेले नोटिफिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हे जीवो फॉर्म फिल अप स्टार्ट हे जीवो ता परे तमे जते बेले करिवो प्रिपरेशन स्टार्ट करिवो केमती पढिवो सीडीपी पुनी अलग अलग सब अछि पार्ट्स अछि खाली तो सीडीपी नाही अलग अलग हमर आर्ट्स पिलांग पई साइंस पिलांग पई डिफरेंट सब पार्ट्स अछि ताको सब केमती तमे क्लियर करिवो गोटे दिन रे क्लियर करी हबो की सो you have to prepare before okay so teacher centric methods are flexible, structured and directive, student driven, inquiry based. Answer is structured and directive. Structured and directive amara directive au structure teacher centric method aguru seta संगठित हेगी अच्छी ठीक अच्छी एसएसबी रो टीजीटी प्रोसेस स्लो अच्छी बट आसीबो एटा निश्चय ठीक अच्छी inclusive education ensures equal opportunity for all, special treatment for few, ignoring needs, focus on exams. Inclusive education ensures what? Equal opportunity for all. So the correct answer is A. Equal opportunity for all.
Learner centric approach uses only textbooks, varied resources and activities, single teaching method, no assessment. Learner centric approach uses कौन यूज करुच्ची ना varied resource and activities. एक्टिविटी आमर कौन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच आसीजिवो सी कौन यूज करे ना वेरिड रिसोर्सेस बहुत गुड़ा बही पढ़िया पड़े बहुत गुड़ा नॉट बही आमर रिसोर्सेस आमर ओईआर हो ऑनलाइन लर्निंग फैसिलिटीज हो किंबा आमर विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ओके सबू मिसिकी आमर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे यूज करा हुए स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज प्रमोट So, small group activities promote individual work, collaboration, competition only, passive learning. Small group activities कौन promote करुची तमरा ना collaboration कौन ना collaboration. SSB TGT खाली नुए पिला माने जो OPSC रो तमरो ओडे बाहरी ची हमरा OER ओडिशा एजुकेशन सर्विस रो जो सब पोस्ट बाहरी ची हमरा ट्रेनिंग कॉलेज मानकरे आमर अपॉइंट हवा को ठीक अच्छे एजुकेशन ने भी बहुत गुड़ा बाहरी लेक्चरर इन एजुकेशन सो तमें माने जदि आमर एजुकेशन ने एमए पास करथिबो आ बीएड करथिबो तार एलिजिबल तमें हबो ठीक अच्छे बाकी तमें पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जे इंग्लिश रो पीजी प्लस बीएड करथिबो सी पके परिबो ओपीएससी रो नोटिफिकेशन को जाओ आ सेठी देख जे सो सबुथिरे सेथिरे सीडीपी तो आसीबा कंपलसरी ना सो सीडीपी सबुथिरे ही आसीबो तमे ओटीटी दियो सीटीटी दियो ओएसएसटीटी दियो हमरो जेटी दियो एसएसबी टीजीटी दियो जति की हमरो रिलेटेड एजुकेशनल रिलेटेड फील्ड रे सीडीपी आसीबा कंपलसरी सो यू हैव टू प्रिपेयर कोलैबोरेशन स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज प्रमोट कोलैबोरेशन टीचर एज ए फैसिलिटेटर मीन्स direct teaching, guiding students to explore, controlling all activities, ignoring student. So, teacher as a facilitator means guiding students to explore. आमे student मानन को guide करिबा, explore करिबा को ठीक अछि. So, the correct answer is B. Inclusive classrooms addresses dash uniform needs, diverse needs, teacher needs, एग्जाम नीड्स इनक्लूसिव क्लासरूम एड्रेस करूची हमरो डाइवर्स नीड्स कोन ना डाइवर्स नीड्स नॉट यूनिफॉर्म नीड्स नॉट टीचर नीड्स नॉट एग्जाम नीड्स दैट इज कॉल्ड डाइवर्स नीड्स ग्रुप लर्निंग इंप्रूव्स डैश ग्रुप लर्निंग इंप्रूव्स आइसोलेशन communication skill, rote learning, teacher control. So, group learning improves dash. Group learning कौन improve करुची बिला मने communication skill को improve करुची कहा को ना communication skill को improve करुची बनेबा सी जो तमे कहूच एसएसबी टीजीटी प्रोसेस बहुत स्लो पिला माने केमती गवर्नमेंट को प्रश्न करिवे केमती प्रोसेस फास्ट हबो ता पई वीडियो ठीक अछि हम वीडियो बनेबो ठीक अछि डोंट वरी सो तम फास्ट पढ़ो तुमको पढ़ी के एग्जाम क्रैक करिवार अछि ना नॉट कि एत सब झमेला रे फसीवार अछि गवर्नमेंट रो ड्यूटी से बाहर करिवो जेबे भेले बाहर करिवो एबे बाहर करछि ना आरआई अमीन गुडा एते गुडा पोस्ट गुडा बाहर करछि ठीक अछि तमे पढ़ो आम पाठ पढ़ाटा जारी रख ठीक अछि हमें दिने ना दिने अचीव करवा ओके कम्युनिकेशन स्किल ग्रुप लर्निंग इंप्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी फोकसेस ऑन डैश लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी फोकस करूची कोथरे नहले तमे ओपीएससी रो जो हमर बाहरी ची ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट ता पई पकाओ तार प्रिलिमिनरी पास करो तापरे तमे एजुकेशन नियो किछ असुविधा नै एई पाठ ही पढिबो लॉन्ग क्वेश्चन ने टीचर सेंट्रिक पेडागोजी फोकसेस ऑन डैश कंटेंट डिलीवरी स्किल डेवलपमेंट मेमोराइजेशन टीचर अथॉरिटी
learner centric pedagogy focuses on स्किल डेवलपमेंट आमर कौन हम पिला माने ना स्किल एनहांस हम कौन हम ना स्किल एनहांस हम द करेक्ट आंसर इज बी सेल्फ लर्निंग डेवलप्स डैश डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंस ग्रुप थिंक कंपटीशन सेल्फ लर्निंग डेवलप्स सेल्फ लर्निंग केतेबेले डेवलप हुए पिला माने जितेबेले पिला इंडिपेंडेंस जितेबेले स्वाधीनता आसे ठीक अछि सो B. The correct answer is B. Teacher-centric system relies on dash. Teacher-centric system कोउथरे rely करूची ना student inquiry, direct instruction, projects, peer teaching. So the correct answer is direct instruction. Teacher-centric system रे teacher कौन करे ना direct instruction दियंती ठीक अछि The correct answer is B. Inclusive teaching adapts dash curriculum only, methods to all learners, teacher style only, exam patterns. Inclusive teaching adapts कौन करिवो ना methods to all learners. While we are talking about inclusive education, that means all. Okay, so methods to all learners. The correct answer is B. Learner centric methods include dash learner centric method कौन include करे lectures only, discussion and project, rote test, teacher dictation. The correct answer is discussion and projects. आमे पिला माने डिस्कशन करिवे तंकर कोन प्रोजेक्ट अछि आ ताकू करिवे सेटा होची डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट होची लर्नर सेंट्रिक मेथड रे इंक्लूड हुए स्मॉल ग्रुप फोस्टर डैश स्मॉल ग्रुप कौन फोस्टर करे ना इंडिविजुअलिज्म कोऑपरेशन आइसोलेशन कंपटीशन कोऑपरेशन आमे जतबेले छोट छोट ग्रुप करबा आमे एबे गोटे कोन ग्रुप करछु ना एसएसबी टीजीटी ग्रुप करछु सेटा कोन ना कोऑपरेशन परस्पर परस्पर प्रति सहयोगिता बढ़ौची नै कि सो द करेक्ट आंसर इज बी टीचर फैसिलिटेशन मींस व्हाट टीचर फैसिलिटेशन मींस लीडिंग ऑल टास्क supporting student led task ignoring student strict control supporting teacher facilitation means what leading all task sabu task nahi jba no ignoring student no strict control no the correct answer is supporting student led task student मानकर जो सब task दिया जीवो teacher कौन करिवो help करिवो so that is called teacher facilitation inclusive education benefits dash inclusive education कोउथरे benefit दिए तुमको कौन benefit दिए ना only teacher all student administrator parents only as usual all students means inclusive education so प्रत्येक शिशु मानकर benefit ता दिए नहीं कि the correct answer is B very good learner centric education values dash learner centric education कौन value करे content over process process and skill exam only teacher authority learner centric education values process and skills learner centric education कोथरे value करे ना process और skill ले ठीक अछि The correct answer is B. Group activities develop solo skill, team skill, competition, isolation. Group activities means that is team skills. The correct answer is B. Self-directed learning needs teachers' constant input, students' initiative, group pressure, lectures. Self-directed learning needs कौन होगा? Students initiative very good पिला इनिशिएटिव नंबर जे कि तार नीड टाकू सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नीड्स स्टूडेंट इनिशिएटिव टीचर सेंट्रिक क्लासरूम हैव टीचर सेंट्रिक क्लासरूम रो कौन थाए पिला माने फ्लेक्सिबल प्लान्स स्ट्रक्चर्ड प्लान्स नो प्लान्स स्टूडेंट मेड प्लान्स So the correct answer is structured plans. What? Structured plans. So
आगुरु टीचर सेंट्रिक क्लासरूम टा स्ट्रक्चर्ड थाए संगठित थाए ठीक अछि द करेक्ट आंसर इज बी inclusive pedagogies uses single method multiple strategy no strategy teacher only method so the correct answer is multiple strategy learner centric focus is on teaching style learning outcomes and skills curriculum design only exam pattern kuha pila mane learner centric focus is on learning outcomes and skills very good lucky learning outcomes and skills small group learning encourages dash small group learning encourage kaha ko encourage karuji na active participation na isolation competition passive roles nuhe facilitator teachers detect all action guide student action ignore student focus on exam so the correct answer is guide student action se kon karanti student ro action taku guide karanti ki facilitator teachers okay the correct answer is b inclusive education aims to exclude some include all learners focus on elite reduce learning include all learners the correct answer is what b learner centric activities are textbook based experiential and inquiry based exam focused teacher led amara experiential and inquiry based learner centric activities ta experiential and inquiry based haba uchit group work improves dash individual scores collaborative skill isolation teachers workload yes b collaborative skills group work improves collaborative skills self learning enhances dash dependence autonomy group think competition self learning enhances autonomy what na autonomy को enhance करे गुरुत्व दिए which approach focuses on the teacher as the primary source of knowledge को एटा फर्स्ट पढ़ेली तुमको क्लास स्टार्टिंग हबा पूर्वरु एटा कहिछि जल्दी आंसर टा कुह टीचर सेंट्रिक वेरी गुड टीचर एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एटा होची या अप्रोच टा टीचर सेंट्रिक एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा ओके टीचर सेंट्रिक आंसर इज बी learner centric methods emphasize passive listening active participation and self learning strict discipline textbook based teaching the correct answer is b active participation and self learning what active participation and self learning inclusive education in classroom diversities mean teaching only advanced student catering to varied learning needs of all students ignoring individual difference focusing only on exam answer is b very good catering to varied learning needs of all student आमे प्रत्येक पिलार नीड्स टाकू बुझिबा आउ कोन करिबा ताकू inclusive education in classroom diversity means uchi catering to varied learning needs of all students small group learning is useful for reducing teacher workload encouraging peer interaction and collaborative skills increasing lecture time limiting student participation the correct answer is b encouraging peer interaction and collaborative skills very good which of the following is not a characteristic of teacher centric learning direct instruction कोटा भितरु teacher centric learning रा कोन
कैरेक्टरिस्टिक नुहे. Direct instruction, teacher as a facilitator, focus on content delivery, limited student input. The correct answer is teacher as a facilitator. एटा कोउथरे हबो ना एटा learner centric learning रे हबो. So the correct answer is B. The correct answer is B. Okay. So एटी मु क्लास को एंड करूची. ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. जय जगन्नाथ.